So today we are going to discuss about the antepartum hemorrhage. Starting with the definition. So what do we understand by antepartum hemorrhage? It is defined as bleeding. Because हमने hemorrhage शब्द का इस्तेमाल किया है मतलब हम bleeding की बात कर रहे हैं. From or into the genital tract after the 28th week of pregnancy but before the birth of the baby. So this definition is very important, right? So what is antepartum hemorrhage? It is defined as bleeding from or into the genital tract after the 28th week of pregnancy but before the birth of the baby. अब क्यों ये ब्लीडिंग हो रही है और 28th वीक के बाद ही क्यों हो रही है? सो व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस? ठीक है, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट रीजंस. सबसे पहले आता है प्लेसेंटल ब्लीडिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे 70% ऑफ द केसेस जो हैं एंटीपार्टम हेमरेज वाले वो प्लेसेंटा के ब्लीड होने के कारण होते हैं. प्लेसेंटा क्यों ब्लीड करेगा? उसके 2 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, और दोनों ही 35% है, राइट? सो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर प्लेसेंटा ब्लीडिंग. देन नेक्स्ट the number is unexplained or indeterminate cases. ये कितने होते हैं? 25% cases होते हैं where we cannot explain the reason why bleeding is occurring, right? And 5% includes extra placental causes. प्लेसेंटा को छोड़कर जो बाकी causes हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं? अब ब्लीडिंग हमने कहा कि हमारे जेनिटल ट्रैक्ट में हो रही है, सो वी आर कंसर्न अबाउट सम सर्वाइको-वेजाइनल लीजन्स, राइट? लोकल सर्वाइको-वेजाइनल लीजन्स. तो अब इसमें हम 4 इंपॉर्टेंट रीजंस पढ़ेंगे, लाइक देयर कैन बी वन सर्वाइकल पॉलिप, there can be carcinoma of the cervix, varicose vein or local trauma also, right? So any polyp, any cancer, any varicose vein or trauma can lead to APH. So these are the causes of antepartum hemorrhage. Next we are going to discuss about placenta previa first of all, because हमने कहा था 70% of the cases are placental. 35 दोनों ही हैं. Let's start with previa. Placenta previa. Now when the placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segment, lower uterine segment may be over and adjacent to the internal os is called placenta previa. Right? Here are some degrees of placental previa, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारा प्लेसेंटा जो है वो नीचे जो है अटैच्ड है, राइट? इट इज इम्प्लांटेड एट द लोअर सेगमेंट्स. यूजुअली ऊपर भी हो सकता था, पर ये नीचे है, और हम कह रहे हैं कि ये इंटरनल ओस को कंप्लीटली भी कवर कर सकता है या थोड़ा पार्शियली भी कवर कर सकता है. ठीक है, सो दिस इज प्लेसेंटा प्रीविया. नेक्स्ट वी नीड टू नो कि किन पेशेंट्स में ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा. सो व्हाट आर द हाई रिस्क फैक्टर्स फॉर दिस? मल्टीपैरिटी नंबर 1, राइट? सो जो भी मल्टी ग्रेविडा होती हैं उनमें ज़्यादातर हमें प्लेसेंटा प्रीविया ही देखने को मिलता है. मेटर्नल एज मोर देन 35 ईयर्स, 4-fold इंक्रीज हो जाते हैं आपके चांसेस. एशियन विमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है. मेटर्नल फैक्टर्स लाइक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट अगर किसी का हुआ हो, राइट? प्रेजेंस ऑफ यूट्राइन स्कार, प्रीवियसली अगर कोई भी सिजेरियन सेक्शन रहा हो, मायोमेक्टमी हुई हो, हिस्टेरोटोमी हुई हो, प्रायर क्योरेटेज, प्रायर हिस्ट्री रही हो, राइट? प्लेसेंटा प्रीविया की, इसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो होता है ये रिकरेंट होता है. ठीक है, तो प्रायर हिस्ट्री किसी के पास हो, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो, प्लेसेंटा का साइज एंड एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, बहुत बड़ा जो है यहाँ पे प्लेसेंटा है, एंड दिस टाइप ऑफ वेराइटी, एंड स्मोकिंग, राइट? सो दिस इज द फैक्टर्स व्हिच आर देयर फॉर द प्लेसेंटा प्रीविया. नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया डिस्कस करेंगे. 2 टाइप्स का प्लेसेंटा प्रीविया होता है. एक होता है ट्रू वाला, ठीक है, ट्रू प्लेसेंटा प्रीविया, और दूसरा होता है लो लाइन प्लेसेंटा. अब जो ये वाला है, इट लाइज एट द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस और अबव इट, ठीक है, या तो इंटरनल ऑस पे ही होगा या थोड़ा सा अबव होगा, राइट? फॉर लो लाइन प्लेसेंटा आपको फिक्स डिस्टेंस दिया गया है एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस 2 सेंटीमीटर विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ द इंटरनल ऑस. अब ये 2 सेंटीमीटर दूर है इंटरनल ऑस से, सो इट इज नॉट गोइंग टू टच इट, राइट? लेकिन जो आपका ये प्लेसेंटा प्रीविया है, दिस इज गोइंग टू कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑस बाय प्लेसेंटा. पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्लीडिंग? ब्लीडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे जैसे प्लेसेंटा ग्रो करेगा, ठीक है, इट स्लोज डाउन इन द लेटर मंथ्स, ठीक है, एंड द लोअर सेगमेंट प्रोग्रेसिवली डायलेट्स. मतलब ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर हमारा लोअर सेगमेंट बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एंड द इनइलास्टिक प्लेसेंटा इज sheared ऑफ द वॉल ऑफ द लोअर सेगमेंट, राइट? हमारा जो वॉल है वो ग्रो कर रहा है, प्लेसेंटा वहीं का वहीं है, तो इसकी वजह से जो प्लेसेंटा है वो इलास्टिक तो नहीं है ना, तो उसकी वजह से उसको एक शेयरिंग ऑफ फोर्स लगती है, ठीक है, एंड दिस लीड्स टू ओपनिंग अप ऑफ यूटेरोप्लेसेंटल वेसल्स and leads to an episode of bleeding. As it is a physiological phenomenon which leads to the separation of the placenta, the bleeding is said to be inevitable. However, the separation of the placenta may be provoked by trauma, including vaginal examination, coital act, external version, or during high rupture of the membranes. And the blood is almost always maternal, although fetal blood may escape from the torn villi, especially when the placenta is separated during trauma. यूजुअली जो यहाँ पे ब्लीडिंग होती है वो कॉजलेस ब्लीडिंग होती है, हमें कॉज पता नहीं होता है इन केसेस में, ठीक है. पर हुई क्यों है ब्लीडिंग? क्योंकि शेयरिंग ऑफ फोर्स जो हुई थी प्लेसेंटा पे लगी थी, राइट? उस कारण से ब्लीडिंग हुई थी. वो मेजॉरिटी ऑफ द रीजन में वही रहेगा कॉजलेस, लेकिन ये रीजंस भी रह सकते हैं, राइट? अब इसमें सेकंड चीज है कॉजलेस ब्लीडिंग. नेक्स्ट है कि ये जो ब्लीडिंग होती है ये अपने आप स्टॉप हो जाती है, राइट? सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्पॉन्टेनियस कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग? इसमें 3 आते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दीस 3. कि ब्लीडिंग अपने आप पेशेंट हिस्ट्री देगा कि कुछ टाइम बाद जो है ब्लीडिंग कुछ आवर्स के बाद स्टॉप होगी. क्यों होती है स्टॉप? बिकॉज ऑफ द थ्रोम्बोसिस ऑफ द ओपन साइनसेस. हमने यहाँ पे बात की थी कि हमारे यूट्रोप्लेसेंटल वेसल्स हैं, और जो यहाँ पे हमारे पास हमारे साइनसेस होते हैं वो ओपन हो गए होते हैं, इस कारण जो है यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही थी, तो इनका थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, ठीक है. दूसरा, मैकेनिकल प्रेशर बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट. मैकेनिकल प्रेशर बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट. सो जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके मैकेनिकल फोर्स की वजह से जो हमारी ब्लड वेसल साइनसेस हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, एंड प्लेसेंटल इन्फार्क्शन. सो दीज 3 मैकेनिज्म्स यू हैव टू नो. नेक्स्ट इज प्लेसेंटल माइग्रेशन.
बेसिकली प्लेसेंटल माइग्रेशन एक मिसनोमर है, प्लेसेंटा माइग्रेट नहीं करता है, ठीक है, इट इज़ अ मिसनोमर। तो एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर आप एक प्लेसेंटा प्रीविया का केस ना भी देखें, कोई नॉर्मल केस देखें और आप देखते हैं अल्ट्रासाउंड में कि 17 वीक्स पे जो है हमारा प्लेसेंटा को कवर कर रहा है इंटरनल ऑस को, ठीक है, सो इट्स जस्ट 17 वीक्स। हम 37 वीक्स पे दैट इज थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर हम फिर से करेंगे अल्ट्रासाउंड, नाउ यू गोइंग टू सी दैट दे शोइंग नो प्लेसेंटा इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट 90% ऑफ द केसेस। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द लोअर सेगमेंट इज फॉर्मिंग इन द 20th वीक। हमारा जो सो इन द 20th वीक वी कैन सी फ्रॉम हियर दिस इज द लेंथ 0.5 सेंटीमीटर एट 20 वीक्स, ठीक है, और ये इंक्रीज हो जाता है 5 सेंटीमीटर तक टर्म पर, ठीक है। सो 20 वीक्स इट इज 0.5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 mm, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं 5 mm से ये 5 सेंटीमीटर, नॉट ओनली 5 सेंटीमीटर, मोर देन 5 सेंटीमीटर ये ग्रो कर जाता है, ठीक है। सो हमने पहले भी डिस्कस किया कि माइग्रेट नहीं करता है प्लेसेंटा, बेसिकली होता क्या है जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो हमारा लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो ग्रो करता है, ठीक है। सो इसकी वजह से रिलोकेशन हो जाती है अवे फ्रॉम द सर्वाइकल ऑस। एंड सेकंड इज ड्यू टू ट्रोफोट्रोपिज्म। इसमें क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है वो टुवर्ड्स द फंडस ग्रो करता है, ठीक है। सो इफ इन इनिशियल ultrasonography reports we see कि हमें placenta previa जैसा कुछ लग रहा है, there is no need to worry, we have to wait and repeat the ultrasounds again, right, and we can find the placenta will grow, the lower uterine segment will grow, sorry, and everything will be fine. नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स। सबसे पहले हम सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। द ओनली सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज वेजाइनल ब्लीडिंग। पेशेंट को थोड़ी पता था कि उसे कुछ होने वाला है, उसे तो ब्लीडिंग हुई जिससे हमें पता चला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिकल फीचर्स जिससे हमें हिस्ट्री में ही पता चल जाएगा कि ये प्लेसेंटा प्रीविया है। इट विल बी अ सडन ऑनसेट, अचानक से, पेनलेस, कोई पेन नहीं होगी, एपरेंटली कॉजलेस, जो जो कॉजेस थे हमने डिस्कस कर चुके हैं, एंड रेकरेंट मतलब हिस्ट्री रही होगी पहले भी इसकी। In about 5% cases, it occurs for the first time during labor, especially in primary gravida, right? And 1/3 of the cases, there is a history of warning hemorrhage, which is usually slight. तो थोड़ी सी ब्लीडिंग आपको नजर आएगी और ये भी प्लेसेंटा प्रीविया का ही इंपॉर्टेंट साइन है, वार्निंग हेमरेज, स्लाइट स्पॉटिंग आपको नजर आ जाएगी, बट ओनली इन 1/3 ऑफ द केसेस। अब ये जो ब्लीडिंग होती है, इट इज अनरिलेटेड टू एक्टिविटी एंड ऑफन अकर्स ड्यूरिंग स्लीप। सोते सोते पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाएगी एंड द पेशेंट बिकम्स फ्राइटेंड ऑन अवेकनिंग टू फाइंड हरसेल्फ इन अ पूल ऑफ ब्लड, एंड दिस ब्लीडिंग इज अनएसोसिएटेड विद पेन अनलेस लेबर स्टार्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। हाउएवर other reasons can be like trauma, hypertension, etc., right? Now very very important, the first bout of bleeding is usually not alarming, but subsequent bouts may be heavier than the previous one due to separation of fresh areas of placenta. So अगर आपके पास पेशेंट आता है with bleeding, मेक श्योर टू एडमिट द पेशेंट। जो भी ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट पार्ट है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, बट वाई इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर चांसेस कि ब्लीडिंग दोबारा हो, और इस बार अगर ब्लीडिंग होगी तो वो और भी ज़्यादा होगी, राइट। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस ब्लीडिंग occurs before 38 weeks and earlier bleeding is more likely to occur in major deliveries, right? Now next are the signs. So in symptoms we just discussed about sudden onset, painless, apparently causeless and recurrent है, warning hemorrhage भी नजर आ सकती है हमें 1/3 केसेस में, और मोस्टली ड्यूरिंग स्लीप पेशेंट सो रहा होता है और वो अपने आप से फाइंड आउट करता है, राइट। और नेक्स्ट हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा ब्लीडिंग की हो सकती है, सो यू हैव टू मैनेज द पेशेंट। साइंस जो हम देखेंगे ना, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस बहुत टाइम से रहा होगा, मे बी द पेशेंट कैन बी अनिमिक, बट दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हमारा मेन फोकस रहेगा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे सबसे पहले। इन सच केसेस द साइज ऑफ द यूट्रस इज प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ गेस्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Next, the uterus feel. We are going to feel the uterus, and the uterus is going to be relaxed, soft, and elastic. Relaxed, soft, and elastic, and there is going to be no area of tenderness. But yes, there is persistence of malpresentation. We are going to see that there can be a breach or transverse or unstable lie, right? And there is also increased frequency of twin pregnancy. And also हमने कहा भी था कि जहाँ पे जो infertility वाली treatment होते हैं तो उनमें twin pregnancy ज़्यादा देखने को मिलती है. So this how it is related also. The head is floating in contrast to the period of gestation. And the head cannot be pushed down into the pelvis. क्यों? क्योंकि नीचे placenta है. The fetal heart sound is usually present, right? And here you're going to see slowing of the fetal heart rate on pressing the head down into the pelvis, which soon recovers promptly as the pressure is released, is suggestive of the presence of low lying placenta. इसे हम कहते हैं stall worthy sign, but it is not a significant sign. तो जैसे एक तो बेबी पहले नीचे नहीं जाएगा, पर जब हम उसको प्रेस करेंगे उसके हेड को तो उसकी जो है fetal heart sound वो थोड़ी फॉल कर जाएंगी, and then we're going to release the pressure, तो वो ठीक हो जाएंगी. So this is stall worthy sign. Then vulval inspection. Only inspection is to be done, okay, whether the bleeding is still occurring or has ceased. और कैरेक्टर ऑफ द ब्लड हम देखना चाहते हैं कि ब्राइट रेड है या डार्क कलर ब्लड है, एंड द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इज टू बी असेस्ड फ्रॉम द ब्लड स्टेन्ड क्लॉथिंग. आप वहां से भी पता कर सकते हैं, बिकॉज इन प्लेसेंटा प्रीविया इट इज ब्राइट रेड इन कलर, occurs from the uteroplacental sinuses close to the cervical opening and it escapes out immediately. तो इसमें हमें कोई क्लॉट फॉर्मेशन या कोई डार्क कलर नहीं मिलेगा, राइट. Vaginal examination must not be done right outside the operation theatre. Then how we are going to confirm the diagnosis? एक तो हम हिस्ट्री से पता कर सकते हैं, and second we are going to do ultrasounds, ठीक है. So through imaging studies we have transabdominal ultrasound, then we have transvaginal ultrasound, जो हमारे काम के हैं. अभी हमें दो डिस्कस करने. We even have 3D power Doppler study, color Doppler flow study and transperineal ultrasound. We can also do about MRI and clinically by internal examination and direct visualization during C-section and during vaginal delivery, right. So if we talk about the transabdominal ultrasonography, the accuracy after 30th week of gestation is about 100%, right, and there can be poor imaging in maternal obesity and posteriorly situated placenta.
And we can also do transvaginal. And this probe is very close to the target area, and higher frequencies could be used to get a superior resolution. So what are the complications? Malpresentation, premature labor can be there, right? This, and then during labor, early rupture of the membrane, cord prolapse, slow dilatation of the cervix, intrapartum hemorrhage, increased incidence of operative interference, and BPH can also be there. Now, prognosis, maternal and fetal. For maternal, the contributing factors are early diagnosis, omission of internal examination, free availability of blood transfusion facilities, potent antibiotics, wider use of cesarean section with expert anesthetist and skill and judgment with which the cases are managed. And for fetal, the reduction in perinatal deaths is principal due to the judicious extension of expectant treatment and thereby reducing the loss from prematurity, liberal use of C-section, which generally lessens the loss from hypoxia and improvement in the neonatal care unit. But there can be deaths, and these deaths can be due to prematurity, asphyxia, or some congenital malformation. Now comes the most important part, how we are going to manage such patient and how you are going to prevent ताकि ना हो. So हम करेंगे regular antenatal care and antenatal diagnosis, right? And we have already discussed this, that a low-lying placenta at 20 weeks with routine ultrasound needs repeat ultrasound examination at 34 weeks to confirm the diagnosis. Warning hemorrhage की हमने बात की थी, 1/3 of the cases में देखा जाता है, so this sign should not be ignored, and we can do color flow Doppler ultrasound or MRI. At home, जब patient घर पे है, the patient is immediately put to bed, and to assess the blood loss, inspection of the clothing soaked with blood, note the pulse, BP, and degree of anemia, quick but gentle abdominal examination, height of uterus, auscultate the fetal heart sound, and to note any tenderness. Vaginal examination should not be done, but this is at home. Maybe the patient is not able to perform, or the people in home, they're not able to perform all these things. You have to come to the hospital, right? Arrangement is made to shift the patient to an equipped hospital having facilities of blood transfusion, emergency cesarean section, and NICU, right? And when you are transporting the patient, and intravenous ringers, solution drip should be started and is kept running during transport. You have to admit the patient, admission to hospital, and all cases of APH, even if the bleeding is slight or absent by the time the patient reaches the hospital, should be admitted. Why? Because all the cases of APH should be regarded as due to placenta previa unless proved otherwise. The bleeding may reoccur sooner or later, and none can predict when it recurs and how much she will bleed. So how are you going to treat the patient? Immediate attention, formulation of the line of treatment. Immediate attention, overall assessment of the case is quickly made. We have to know about the amount of the blood loss. We have to take the blood samples are taken. Why the blood samples are taken? For group cross matching and estimation of hemoglobin. A large bore IV cannula is cited, and then infusion of normal saline. And then we have to do gentle palpation because we have to check whether there is uterine tenderness or not, and auscultation has to be performed to note the fetal heart rate. Inspection of the vulva, we have already said that we have to just inspect. We do not have to do any pervaginal examination. So this is the immediate attention. Now how are you going to treat this patient? Now the treatment includes expectant management or the active definite management. Let's start with the expectant treatment, and this is by McAfee and Johnson. And the aim here is to continue the pregnancy for fetal maturity without compromising the maternal health. हमें बेबी को भी ठीक रखना है, टर्म तक ले जाने की कोशिश करेंगे, but we do not have to compromise the maternal health. Now, if we have to continue the expectant management, how are you going to do? First of all, the vital prerequisites. We should have things already, like we should have blood for transfusion whenever required. Then there has to be facilities for cesarean section should be available throughout 24 hours, right? What all are the cases? Obviously, the cases which will be stable now, they can be carried out at term. So mother is in good health status, hemoglobin is more than 10, equal to 10. Duration of pregnancy is less than 37 weeks. If the mother is already at 37 or 37 plus, we can just do the cesarean or vaginal whatsoever we can do in that particular time. But agar wo 37 se kam hai, so we have to continue till 37. Active vaginal bleeding is absent and fetal well-being is assured. Okay? Bed rest. So what we're going to say to the patient, bed rest hi karna hai with bathroom and toilet privileges. Then we have to do investigations from time to time. We have to do hemoglobin estimation, blood grouping, and urine for protein are done. Periodically, we have to inspect of the vulval pads, fetal surveillance with ultrasound at an interval of 2 to 3 weeks. And supplementary hematinics should be given, and the blood loss is replaced by adequate cross-matched blood transfusion if the patient is anemic. When the patient is allowed out of the bed, 2 to 3 days after the bleeding stops, a gentle speculum examination is made to exclude local cervical and vaginal lesions for bleeding. Use of tocolytics, agar contractions usko ho rahi thi, so we're going to use tocolytics. We do not want any contractions like magnesium sulfate, right? And where should be done? It should be basically done at hospital. But you can be, if one wants, can at home can also be done. Okay. Now termination of the expectant treatment. When do we have to end this treatment? We have to end it at 37 weeks of pregnancy. But जरूरी नहीं 37 तक pregnancy जाए. There can be cases like preterm delivery हो जाए. किन cases में? In cases of recurrence of breast hemorrhage, right? Or the fetus is dead. Right, or the fetus is dead. The fetus is found congenitally malformed on investigations. Right. So for replacement of the blood loss can be done by blood transfusion. However, there is the risk of IUGR. So very very important is steroid therapy is indicated when the duration of pregnancy is less than 34 weeks. अगर 37 तक तो हम ले जा रहे हैं, but if the pregnancy POJ is 34 से भी कम है तो हमने steroid देंगे. Betamethasone reduces the risk of respiratory distress of the newborn when the preterm delivery is considered. So what is the active? Active में तो वही है. Indications क्या होंगे उसके लिए? Bleeding is occurring at or after 37 weeks of pregnancy. ठीक है, मतलब पूरा टर्म हो चुका है, so we can do active management. Or the patient is in labor only. Patient is in exsanguinated state on admission. Bleeding is continuing and of moderate degree.
baby with non-reassuring cardiac status or dead or known to be congenitally deformed. So we can do cesarean delivery and we can do vaginal delivery. But vaginal only when 2 to 3 centimeter away from the internal cervical or the placenta is, right? And this is the flow chart of the scheme of the management. एक्सपेक्टेंट है, एक्टिव है, 37 वीक्स तक हम एक्सपेक्टेंट को ले गए, एंड देन आफ्टर 37 वीक्स अल्ट्रासोनिक एविडेंस के बेसिस पे हमने वी हैव टू कंडक्ट द डिलीवरी.